Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Vihari, Jaya Gopi Janvallabha, Jaya Girivaradhari. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Vihari, Jaya Gopi Janvallabha, Girivaradhari. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Vihari,
Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna. So very warm welcome to all of you for today's session on the Srimad Bhagavatam. We'll start our session with the prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Tashtapráyéšvabhadreshu Nityam Bhagavat Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Nashtiki. In our previous session, we discussed that after the secondary creation, which was started by Lord Brahma, the different religious codes, moral codes emanated from Lord Brahma, and all these emanated because Vedas were emanated from the lotus mouth of Lord Brahma. So from the four mouths of Lord Brahma, the four Vedas got emanated, and then Upavedas were emanated. But the most important principle was Varnashram Dharma. The four orders and the four statuses of life, of human life, which enables human beings to follow the principles of Dharma. So that also was created or emanated from Lord Brahma. And we'll discuss more about it in the upcoming shlokas. So we'll begin our discussion today with text 41, shloka number 41 of the 12th chapter of the third canto of Srimad Bhagavatam. Vidyadanam tapassatyam dharmasyeti padani cha ashramamscha yatha sankyam asrijat sahavrittibhihi. Vidyadanam tapassatyam dharmasyeti padani cha ashramamscha yatha sankyam asrijat sahavrittibhihi. Translation: education, charity, penance, and truth are said to be the four legs of religion. And to learn this, there are the four orders of life with different classification of castes according to vocation. Brahma created all these in systematic order. You see. So, Vidya, Danam, Tapas, Satyam. Dharmasya iti padani cha. These are the four pillars or the four legs of Dharma. Vidya means education, which teaches us cleanliness, shaucham. So we become clean because of Vidya or knowledge. The Vedic knowledge makes us clean from within, and that is called, that also is the cause of shaucham. Shaucham means cleanliness. And danam means charity.
Now, charity, sometimes people think charity means charity of wealth or money, but no. The greatest charity is charity of knowledge, divine knowledge, transcendental knowledge. And that is done by the spiritual master, Guru. And that is why the greatest gift to humanity is the saintly people, because they do the greatest charity, which is charity of knowledge or charity of Divya, transcendental knowledge. And that is because of Daya, because pure devotees are very compassionate towards the fallen souls, and they try to bring everyone closer to God or Krishna, because without coming close to Krishna, no one can be happy. So, because they are merciful to the fallen souls, they do this charity of knowledge, the charity of education. So, education is meant to cleanse ourselves. That is called Shaucham. Dhanam means charity, and the greatest charity is charity of knowledge of Krishna. Then tapa means austerity, and satyam means truthfulness. So these are four dharmasya iti padanicha. These are four pillars of dharma, four pillars of religious life or righteous life. Then ashramamscha yatha sankhyam. And then the ashramas were created. Ashramas means varnashram. As we know, there are four orders or the four statuses of human life. These are called ashramas. So which are these ashramas? So brahmacharya, brahmacharya, grihastha, vanaprastha, and sannyas. These are the four ashramas. And sankhya means the four orders of life. Which are the four orders of life? So varnashram. Varnashram means atah pumbir dvija sreshta varnashram vibhagasha swanushthitasya dharmasya sansiddhir haritoshanam. The four orders and the four statuses of life were designed for what purpose? The purpose was haritoshanam. These four orders of life, varnashram, were created for pleasure of Hari. Everyone has to be engaged to satisfy Krishna. Why? Because yasmin tushte, jagat tushte. So the purpose of varnashram is to satisfy Krishna. So that is called varnashram. So ashram. So the four orders of human life are Brahman, Kshatriya, Vaishya, and Shudra. So Brahmanas are meant to educate the people. They are the leaders of the society because they train or educate people in Krishna consciousness. So they are the Brahmanas. Then the Kshatriyas protect dharma. They are the protectors of religious life of people. And Vaishya means mercantile community. They support dharma by their wealth. And Shudras means those who support the other three classes by utilizing their material power to support religious orders of human life. So these are the four orders, and Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha, and Sannyas are four ashramas. So the four varnas are Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra, and the four ashramas are Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha, and Sannyas. So Brahmachari ashram is student life. It is meant for giving education to the people so that they live a clean life. Then the second ashram is once a person is educated properly, then generally he becomes detached from material life. But those who are not able to do that, they enter into grihastha or householder life.
But Grihastha life does not mean simply to enjoy sense gratification. No. Grihastha life is also an ashram. The purpose of Grihastha life is that husband and wife both together practice Krishna consciousness and lead their life with Krishna in the center. So that is Grihastha ashram. And the third ashram is Vanaprastha. Vanaprastha means retired life, where husband and wife, they don't live together, and the husband, he starts preparing to take sannyas, and the wife, she gets engaged in teaching moral principles to her descendants, the son, daughter, grandsons, granddaughter. So the wife gets engaged in that, and the husband, he starts preparing for sannyas, because then he leaves home, and that's when he leaves home, that is sannyas order. He leaves home to preach Krishna consciousness. So that is sannyas. Sannyas means a person who preaches Krishna consciousness all over the world by traveling. So the whole purpose of this Varnashram is Sansiddhim Hari Toshanam. So the whole purpose of this Varnashram is to please Krishna, so that every human being engages himself in the mission of Lord Krishna. And what is the mission of Lord Krishna? Dharma Sansthapanarthaya. Dharma Sansthapanarthaya. The mission of the Lord is to re-establish Dharma. And establishment or propagation of Dharma is done by the devotees of the Lord. And that is why this Varnashram is designed, so that everyone follows the religious codes which are given by Krishna in the Bhagavad Gita. So Varnashram is the stepping stone of human civilization. Varnashram is meant to purify our animal propensities. A person who is not following religious codes, or a person who is not following Varnashram Dharma, he is basically as good as an animal, because dharmena hina pashubhi samana. If a person is not religious, then he is an animal. If a person is not following Sanatan Dharma, then he is as good as animal, because that is the difference between human beings and animals. Animals cannot understand Dharma. Only in human life we have got this facility to understand God or realize God. And that happens by following the instructions of Krishna. So, in this way, a person gradually advances and reaches the highest perfection of human life, which is knowledge about Krishna. The greatest success of human life is to realize Krishna and to have complete knowledge of Krishna, right? So that's what is the purpose of this creation by Lord Brahma. Because Lord Brahma knows that without Krishna consciousness, living entities cannot be happy in this material creation. Now text 42, shloka number 42. Savitram prajapatyam cha brahmam chath brihat tatha varta sanchaya salina srilonch iti vrit vaigrihe. Savitram prajapatyam cha brahmam chath brihat tatha varta sanchaya shalina shilonch iti vaigrihe. Translation. Then the thread ceremony for the twice born was inaugurated, as were the rules to be followed for at least 1 year after the acceptance of the Vedas. Rules for observing complete abstinence from sex life, vocations in terms of Vedic injunctions, various professional duties in household life,
and the method of maintaining a livelihood without anyone's cooperation by picking up rejected grains. Now you see, Savitram Prajapatyam Cha. So Savitra means the ceremony in which we become twice born, initiation, Diksha, the process of Diksha. And Prajapatya means to follow strict rules of celibacy. Brahman cha atha brihat tatha. Brihat means to accept the vows of celibacy and practicing them strictly. That is called brihat. And Varta Sanchaya Shalina. Varta means to maintain purity of speech by only talking about Krishna and nothing else. Purification of speech means when we speak only about Krishna, Krishna Katha, glorifying Krishna everywhere. So that is purification. That is called Varta Sanchaya. Shalina. Shalin means self-satisfied, without expecting from anyone else. Shiloncha iti vaigriha. And not depending on anyone for maintenance, but depending on Krishna for maintenance, which is followed by sannyasis or vanaprasthas, those who are retired from household life. So these were also generated from Lord Brahma. This way of leading life, right? So this is how education was designed by Lord Brahma. So the modern education system is man-made, and that is why it is full of faults. It simply creates nuisance amongst human beings. But the original education system was created by Lord Brahma, who is the creator. And it was sufficient to train a person to become a pure devotee of Krishna since childhood. The training was such that the students were encouraged, even from childhood, to give up attachment to family life. And that is why most of the students, they would remain lifelong celibate. Only those students who were not able to accept this renounced order since childhood, they were permitted to get married and lead a good householder life with Krishna in the center. So that was the training given all over the universe. This is the training which is given. And even on earth, this training was given to students till 500 or 600 years back. But as we know that with time, everything degrades. Our body degrades, material nature degrades, everything degrades with time. Even the buildings that you construct will degrade with time. This is the tendency of this material world. And so this material knowledge also degraded. And now the material knowledge or education system that we see, the current education system, it simply creates animals. They are simply slaughterhouses of education, which are creating two-legged animals, simply eating, sleeping, mating, and defending. There is no systematic training. There is no systematic education. There is no Krishna in the center. And anything connected to Krishna is a spirit. Anything disconnected from Krishna is matter. So this whole materialistic civilization is thriving, and which is creating nuisance all over the world. And the root cause is this education system, which we see now, which is full of materialism. There is no spiritual ingredient in this current education system.
The only ingredient which is required is Krishna, because everything disconnected from Krishna is material. So if Krishna is not in education system, if knowledge of Krishna is not there, then that education system is completely destructive, which will destroy this whole civilization ultimately. Because we are disconnected from the roots, because Lord Brahma created this education system. So basically, we are disconnected from our roots. And if you are not rooted, then you are bound to be destroyed over a period of time. So that's where this current civilization is heading towards. Because there is no training to become Krishna conscious since childhood. Now, text 43, shloka number 43. Vaikhanasa Valakhilo Dumbara Pena Pavane Nyase Kutichaka Purvam Bahvo Dohansa Nishkriyo Vaikhanasa Valakhilyo Dumbara Pena Pavane Nyase Kutichaka Purvam Bahvo Dohansa Nishkriyo. Translation: the four divisions of retired life are Vaikhanasas, Valakhilyas, Audumbaras, and Phenapas. The four divisions of renounced order of life are Kutichaka, Bahvodas, Hansas, and Nishkriyas. All these were manifested from Brahma. So now we see here in Varnashram, the four ashramas or the four statuses of life: Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha, and Sannyas. Brahmacharya is also renounced order of life. Only in household life a person can be attached to the family and he can work towards raising the family. But not that whole life a person has to be a grihastha or householder. No. A time should come when he retires from his active family life and he takes up Vanaprasthashram, which is retired life. So here in this shloka, it is mentioned there are four statuses of there are four orders or four levels of retired life: Vaikhanasa, Valakhilya, Audumbara, and Phenapa. So these are four orders or the four statuses or the four ladders of retired life or Vanaprastha life. Then there are four orders of sannyas or complete renounced life also. Complete renounced life is called sannyas order. So there are four levels of sannyas also. Which are those? So nyase means to give up. Nyas means renounced order. And sannyas means sat nyas. Sat means Krishna. So one who gives up everything for pleasure of Krishna, he is called a sannyasi. So there are four levels of sannyasis also: Kutichaka, Bahvodaka, Hansa, and Nishkriya. So Kutichaka means a sannyasi who lives by begging. Then Bahvodaka means who stops begging and he preaches Krishna consciousness and people support him. Then Hansa means the highest order of sannyas, Paramhansa. Their only goal of life is to preach Krishna consciousness. They only do Krishna Katha. They are called Paramhansa. That's what is called Hansa in this shloka. And Nishkriya means a time comes when he gives up everything and he simply focuses on Hari Katha and Hari Kirtan. And a time comes when he gives up everything and only does Hari Bhajan.
Bhajananandi, they are called. So Nishkriya means he gives up all Nishkriya. Kriya means activity, and Nish means no material activity. In Sanskrit, whenever the word Ni is used, Ni means rejecting the material aspect. Akriya means no activity. Nishkriya means no material activity. So those sannyasis who give up all material activity, they give up everything and only engage in Hari Kirtan or Hari Bhajan. They engage in chanting the holy names of Krishna. They are called Paramhansa, Nishkriya Sannyasi. Generally, they are also called Babajis. They are called Babaji. So in sannyas, there is sannyas diksha, and at the end of sannyas, or in the highest order of sannyas, is Babaji diksha. Avadhut, they are also called Avadhut, means they have given up everything and their only goal of life is Krishna Bhajan. Bhajananandi, they are called. So these are the 4 levels of sannyas order, and Krishna talks about it in the Bhagavad Gita also. Chatur Varnyam Maya Srishtam. The 4 varnas and 4 ashramas are designed by Krishna. So this is not, Varnashram is not an invention of any person. No, this Varnashram is designed by Krishna, and this was created and executed by Lord Brahma. So Varnashram is designed by Krishna and executed by Lord Brahma, and that is why in some form you will see Varnashram all over the world and all over the universe, some or the other form. Although currently it is in degraded form, but still you find it all over the universe. So that is what we see here. You can like the video, comment, subscribe. We'll stop here. We'll continue our discussion. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे कृष्णा। आप सबका बहुत स्वागत आज के भागवत के सत्र में, और प्रार्थना के साथ अपने सत्र को प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
तो हमने देखा अपने पिछले सत्रों में किस प्रकार ब्रह्मा जी जो दूसरे चरण सृष्टि का वो करते हैं। पहला चरण तो भगवान करते हैं, नारायण। और जब ब्रह्मा इस सृष्टि की दूसरे चरण की रचना करते हैं तो किस प्रकार उनके चार मुखों से वेद निकले, जिससे सारे धर्म की स्थापना हुई। साधु संत धर्म की स्थापना करते हैं, वो भी उन्होंने उसका भी सृजन किया। और किस तरह से अलग अलग धर्म के जो तथ्य हैं, उपवेद, यज्ञों की विधि, ये सारी चीजें ब्रह्मा जी के सृष्टि का एक अंग है। और हमने इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग देखा वर्णाश्रम। वर्ण और आश्रम किस तरह से ब्रह्मा जी ने उसकी सृष्टि की, इसी के बारे में और हम देखेंगे आगे आने वाले श्लोकों में। तो आज हम प्रारंभ करेंगे अपनी चर्चा को 41वें श्लोक से, तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय का 41वां श्लोक। विद्यादानं तपः सत्यं धर्मस्येति पदानि च आश्रमांश्च यथा संख्यम् असृजत् सह वृत्तिभिः। विद्यादानं तपः सत्यं धर्मस्येति पदानि च आश्रमांश्च यथा संख्यम् असृजत् सह वृत्तिभिः। ट्रांसलेशन, अनुवाद। Education, charity, penance, and truth are said to be the four legs of religion. And to learn this, there are four orders of life with different classification of castes according to vocation. Brahma created all these in systematic order. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। तो विद्या, दान, तप और सत्य, ये धर्म के चार स्तंभ हैं। और इसके साथ साथ वर्णाश्रम धर्म, ये सब ब्रह्मा जी ने क्रमशः इसकी स्थापना की। अब आप देखिए, विद्या दानम तप सत्यम। विद्या, विद्या के कारण जो ब्रह्म विद्या है, जो या वेदों का ज्ञान है, जिसे हम विद्या कहते हैं, वो जो विद्या है वो हमें शौचम यानी शुद्ध करती है। आंतरिक और बाहरी दोनों आयाम पे हमको ये शुद्ध करती विद्या। तो इसलिए जो धर्म का पहला स्तंभ है विद्या, वो शौचम यानी जो शुद्धता है उसका कारण है। तो इसलिए धर्म का जो स्तंभ है विद्या और शौच, दोनों एक साथ ही हम उसको देखते हैं। तो इसलिए शौचम। उसके बाद दानम, दान करना। तो कई बार लोगों को लगता है दान का मतलब होता है किसी को धन देना या लक्ष्मी से किसी की सेवा करना, लेकिन वो तो भौतिक दान की प्रक्रिया है। दान हम दया के कारण करते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में दान क्या है? वास्तविक दान जो है वो गुरु करते हैं, वो साधु संत करते हैं। और वो कहते हैं दान ज्ञान का दान करना, ज्ञान प्रदान करना, लोगों को कृष्ण का ज्ञान देना, वो सबसे बड़ी दया है। क्योंकि साधु संतों को यह पता है कि बिना कृष्णा के इस जगत में कोई भी प्रसन्न और तुष्ट नहीं रह सकता। और इसलिए वो लोग ज्ञान का दान करते हैं। तो वास्तविक जो दान है वो ज्ञान का दान है। भौतिक दान तो शरीर के साथ नष्ट हो जाएगा, लेकिन वास्तविक जो दान है, भगवान का जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान, वो जो दान है वो सबसे बड़ा दान है। तो साधु संत सबसे बड़े दानी होते हैं। और इसलिए हम सबका
इसीलिए दया जो है वो साधु संतों में सबसे अधिक होता है, क्योंकि उनके दया और करुणा के कारण जगत में लोग भगवान से जुड़ पाते हैं, क्योंकि उनके ज्ञान का दान वो करते हैं। तो इसीलिए दान जो है वो दया का रूप लेता है, और इसीलिए वो दया जो है वो साधु संतों में होती है, क्योंकि वो सभी को प्रसन्न और तुष्ट देखना चाहते हैं, और इसके लिए भगवत ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, जो साधु संत लोग देते हैं। तो विद्या के कारण शौच यानी शुद्धता, और दान दया का भाव होता है। अब तीसरा है तपह। तपह मतलब तपस्या। भगवान को तुष्ट करने के लिए जो भी हम इस जीवन में कठिनाइयां उठाते हैं उसे तपस्या कहते हैं। और सत्य, सत्य मतलब भगवान कृष्ण कथा जो परम सत्य है, सत्यम परम धीमहि, भगवान को परम सत्य कहते हैं, कृष्णा को, और इसीलिए उनकी कथा करना ये सत्य है। तो इसीलिए ये चार जो है ये धर्म के स्तंभ है। शौचम, दया, तप और सत्यम। शौचम विद्या के कारण होता है, और दया दान के कारण होता है। तो ये चार स्तंभ हैं धर्म के। फिर आश्रमांश यथा संख्यम, और इसके बाद जो ये ब्रह्मचर्य आश्रम है, जो वर्णाश्रम जिसे हम कहते हैं, जिसकी जिसका प्रारंभ जो है वो वर्णाश्रम में ब्रह्मचर्य से होता है। तो चार वर्ण और चार आश्रम होते हैं, जैसा हम सब जानते हैं। चार वर्ण कौन कौन से हैं? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो होते हैं वो कृष्ण कथा का ज्ञान लोगों को देते हैं। क्षत्रिय जो होते हैं वो कृष्ण कथा और धर्म की रक्षा करते हैं। वैश्य जो होते हैं वो अपने धन से धर्म को, अपना अपने दान से अपने धर्म, जो उनका धन है उससे सेवा करते हैं धर्म की, कृष्णा की। और शूद्र जो है वो अपने, जो भी उनके पास शक्ति है उसका प्रयोग करके धर्म को सहायता करते हैं। तो ये चार वर्ण हैं। चार आश्रम कौन कौन से हैं? तो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ब्रह्मचारी का मतलब विद्यार्थी जीवन, जिसमें हम कृष्ण कथा का ज्ञान हमको दिया जाता है। उसके बाद, और उसमें ज्ञान इस तरह से दिया जाता है ताकि मनुष्य कृष्णमय हो जाए, उसे ब्रह्मचर्य का जीवन कहते हैं। ब्रह्म मतलब कृष्णा, और ब्रह्मचर्य जैसे दिनचर्या होती है वैसे ब्रह्मचर्या हो। तो जब हम कृष्णा में डूब जाते हैं, ज्ञान इस तरह से दिया जाता है गुरु के द्वारा कि मनुष्य कृष्णा में कृष्णमय हो जाता है, उसे ब्रह्मचारी जीवन कहते हैं। और इसीलिए मुख्यतः वो जब उसके बाद गृहस्थ जीवन में भी प्रवेश करेगा, तो फिर पति पत्नी का यही दायित्व होता है कि वो कृष्णा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर दोनों पति पत्नी अपने जीवन का निर्वाह करें। इसे गृहस्थ जीवन कहते हैं, इसे गृहस्थ आश्रम कहते हैं। उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम है, जिसमें मनुष्य पति पत्नी साथ में नहीं रहते। पत्नी जो है वो अपने परिवार को कृष्णमय बनाती है, और पति जो है वो परिवार से अलग रहने लगता है और सन्यास की तैयारी करने लगता है। और अंतिम जो चौथा आश्रम है उसे सन्यास कहते हैं, जिसमें मनुष्य सब कुछ छोड़ देता है और पूरे विश्व में जाकर भगवत ज्ञान का प्रचार करता है। इसे सन्यास आश्रम कहते हैं। तो यहाँ पर उन चार आश्रमों के बारे में बताया जा रहा है। तो वर्णाश्रम का लक्ष्य क्या है? अतः पुंभिर द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागश स्वनुष्ठित धर्म से संसिद्धिर हरितोषणम। हरितोषणम, वर्णाश्रम का जो लक्ष्य है वो हरि को तुष्ट करना, भगवान को तुष्ट करना, उन्हें प्रसन्न करना, ये वर्णाश्रम का लक्ष्य है।
वर्णाश्रम बना ही हरि को तुष्ट करने के लिए। तो इसीलिए वर्णाश्रम धर्म जो है वो भगवान के लिए बनाया गया और भगवान के द्वारा बनाया गया। तो वर्णाश्रम धर्म जो है वो मनुष्य जीवन की पहली सीढ़ी है। जो वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करता, जो सनातन धर्म का पालन नहीं करता, वो पशु है, वो मनुष्य है ही नहीं। मनुष्य जीवन प्रारंभ ही वर्णाश्रम से होता है और इसलिए पूरे ब्रह्मांड में सभी जगह हम वर्णाश्रम देखते हैं। अभी धरती पर अपने शुद्ध रूप में वो नहीं है, अशुद्ध रूप में है, लेकिन सभी जगह मिलेगा वर्णाश्रम। और मनुष्य जीवन की जो पराकाष्ठा है, जो सबसे उच्चतम पद्धति है, वो क्या है? वो है भगवत ज्ञान, यानी कृष्ण का ज्ञान, भगवान का ज्ञान होना और भगवान का साक्षात्कार करना, जो वर्णाश्रम की उच्चतम पद्धति है और मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य है। 42वां श्लोक। सावित्रम प्राजापत्यम च ब्राह्मम चाथ बृहत् तथा वार्ता संचयशालीन शीलोंच इति वै गृहे। सावित्रम प्राजापत्यम च ब्राह्मम चाथ बृहत् तथा वार्ता संचयशालीन शीलोंच इति वै गृहे। Translation. Then the thread ceremony for the twice born was inaugurated, as were the rules to be followed for at least 1 year after the acceptance of the Vedas. Rules for observing complete abstinence from sex life, vocations, terms of Vedic injunctions, various professional duties in household life, and the method of maintaining a livelihood without anyone's cooperation by picking up rejected grains. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। तो इसके बाद दीक्षा का विधान, वेदों के नियमों को पालन करने का विधान, ब्रह्मचर्य का विधान, ज्ञान का विधान, गृहस्थ जीवन का विधान और संन्यास जीवन का विधान, ये सब ब्रह्मा जी ने उसकी सृष्टि की। आप देखिए, सावित्रम, सावित्रम का मतलब होता है जब हमारी दीक्षा हो जाती है गुरु की कृपा से, जब हम दूसरा जन्म हमारा होता है दीक्षा से। पहला जन्म हमारे भौतिक माता पिता के माध्यम से होता है और दूसरा जन्म हमारा गुरु की कृपा से होता है, तो उसे दीक्षा का विधान कहते हैं। तो उस विधान का सृजन हुआ ब्रह्मा जी के द्वारा। फिर प्राजापत्यम, प्राजापत्यम का मतलब जब हम गुरु के बताए हुए नियमों का पालन करते हैं। उसके बाद ब्राह्मण च अथ, ब्राह्म मतलब ब्रह्म का ज्ञान, यानी वेदों का ज्ञान गुरु के मुख से हम सुनते हैं। बृहत् तथा, बृहत् मतलब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, जो पूरे ब्रह्मांड में जो विद्या पद्धति है उसमें बचपन से ही बच्चों को ब्रह्मचर्य जीवन के लिए शिक्षा दी जाती है ताकि वो बचपन से ही भगवान में निष्ठ हो जाए। और इसलिए मुख्यतः ये शिक्षा इस तरह से दी जाती है कि मनुष्य भगवत प्राप्ति उसका लक्ष्य हो जाता है और इसीलिए वो भौतिक चीजों से विरक्त हो जाता है। जो इसको नहीं कर पाते, जो विरक्त नहीं हो पाते, वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। नहीं तो मुख्यतः सभी जो ब्रह्मचारी हैं वो सीधा संन्यास लेते थे, जिन्हें नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहते हैं। तो बृहत यानी उस नियम को पालन करना, जो ब्रह्मचर्य के व्रत है उसको पालन करना, तो बृहत व्रत कहते हैं। उसका भी सृजन हुआ ब्रह्मा जी के द्वारा। फिर वार्ता संचय, यानी वार्ता मतलब बात करना, बोलना। तो वार्ता कौन सी होनी चाहिए? कृष्ण कथा, सिर्फ कृष्ण की वार्ता करना, कृष्ण कथा करना, कृष्ण कीर्तन करना।
ये साधुओं का धर्म होता है और उसका भी सृजन ब्रह्मा जी ने किया। फिर शालीन, शालीन मतलब किसी और पर निर्भर न होना, भगवान पर निर्भर होना अपने जीवन यापन के लिए। और शीलोंचक यानी अपना जो अ, व्यवहार है, अपना अपने जीवन यापन के लिए भिक्षा मांग के अपने जीवन को चलाना, जो सन्यासियों का धर्म होता है, जो सन्यासी अपना इस तरह से जीवन चलाते हैं दान मांग के। तो ये सारी चीजें, ये जो है ब्रह्मा जी ने इसका सृजन किया, उनसे ये सारी चीजें प्रकट हुई। 43वां श्लोक। वैखानसा वालखिल्यो दुम्बराफेन पावने न्यासे कुटीचक पूर्वम बह्वो दोहंस निष्क्रिय। वैखानसा वालखिल्यो दुम्बराफेन पावने न्यासे कुटीचक पूर्वम बह्वो दोहंस निष्क्रिय। ट्रांसलेशन, अनुवाद। The four divisions of retired life are the Vaikhanasas, Valakhilyas, Odumbaras, and Phenapas. The four divisions of renounced order of life are Kutichaka, Bhagavodas, Hansas, and Nishkriyas. All these were manifested from Brahma. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। वानप्रस्थ के चार आयाम वैखानस, वालखिल्य, औडुंबर और फेनपा, और संन्यास के चार आयाम कुटीचक, बहोदक, हंस और निष्क्रिय, इसका सृजन ब्रह्मा जी ने किया। अब आप देखिए, वानप्रस्थ के चार आयाम यहाँ पर ब्रह्मा जी ने इसका सृजन किया। वानप्रस्थ के चार आयाम कौन कौन से हैं? वैखानस, वालखिल्य, डुम्बरा या औडुम्बर भी कहते हैं उसको, और फेनपा। तो इसे वानप्रस्थ आश्रम के ये चार आयाम हैं, जिसमें मनुष्य घर को त्याग कर पति पत्नी अलग रहते हैं और वो सन्यास की तैयारी करता है। फिर सन्यास के भी चार आयाम, जो सबसे उच्चतम पद्धति है मनुष्य जीवन की, सन्यास, उसके भी चार आयाम। इसलिए आप देखिए श्लोक में क्या करें, न्यासे, न्यासे, न्यास का मतलब सत न्यास, न्यास मतलब त्याग देना। किसके लिए? सत न्यास, सन्यास, सत जोड़ न्यास दो शब्दों से बना है। सत का मतलब कृष्णा, तो कृष्णा के लिए जगत को यानी अपने परिवार को, सब कुछ को त्याग देना, उसे सन्यास कहते हैं। तो सन्यास में पहली अवस्था होती है कुटीचका। कुटीचक का मतलब होता है कि घर के बाहर कुटिया में रहना और लोग आके खाना पीना दे देते हैं सन्यासी को, तो उसे कुटी, कुटी मतलब कुटिया में रहे, कुटीचका। फिर पूर्व मतलब पहला वो है, फिर बहवो दो, बहोदक, बहुदक, इसका मतलब भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करना। तीसरा होता है हंस, परम हंस, सबसे उच्चतम पद्धति होती है जिसमें मनुष्य सिर्फ कृष्ण कथा करता है, उसके जीवन का लक्ष्य कृष्ण कथा है, वो सिर्फ कृष्ण कथा और कीर्तन, यही वो करता है। और उसके बाद अंत समय में मनुष्य सिर्फ हरि भजन में उसको आनंद आता है, उसे निष्क्रिय कहते हैं। निष्क्रिय दो शब्दों से बना है, निक्रिय, क्रिया यानी भौतिक क्रियाएं। संस्कृत में जब भी नि शब्द का प्रयोग होता है, इसका मतलब भौतिक चीजों का को नकार देना और आध्यात्मिक चीजों को ले लेना। अक्रिय का मतलब होता है क्रिया छोड़ देना, लेकिन निष्क्रिय का मतलब होता है भौतिक क्रियाएं छोड़ देना, यानी जो जड़ क्रियाएं हैं उसको मनुष्य बंद कर देता है और सिर्फ कृष्ण क्रिया करता है, कृष्ण भगवान का भजन करता है, कीर्तन करता है, सिर्फ उसी में उसको आनंद आता है। तो ये सन्यास की सबसे उच्चतम पद्धति होती है और इस दीक्षा को बाबा जी दीक्षा कहते हैं। तो जो भजनानंदी जो भक्त होते हैं, जो सब कुछ त्याग के सिर्फ भजन करते हैं भगवान के नाम का, वो
ऊपर के लोकों में ऐसे बहुत सारे साधु संत हैं, और पृथ्वी पे भी इस तरह के बहुत सारे साधु संत हुए हैं जो जंगल में जाके सिर्फ भगवान का भजन करते हैं। भजनानंदी उन्हें कहते हैं, भजन में ही सिर्फ उनको आनंद आता है, तो उन्हें बाबा जी भी कहते हैं। बाबा जी कहते हैं, उन्हें अवधूत भी कहते हैं, जो सब कुछ त्याग के सिर्फ भगवान का भजन करते हैं, उनकी सिर्फ कृष्ण कथा करते हैं, कृष्ण कीर्तन करते हैं, तो उन्हें बाबा जी कहते हैं, अवधूत कहते हैं। तो वो एक दीक्षा की प्रणाली वो भी होती है। तो ये 4 संन्यास के आयाम यहाँ पर ब्रह्मा जी ने उसका भी सृजन किया। तो ये जो वर्णाश्रम है, कई बार लोगों को लगता है कि ये आजकल किसी ने आविष्कार किया। नहीं, ये किसी का आविष्कार नहीं है, ये स्वयं भगवान से आया है, जिसको भगवान भगवत गीता में भी बताते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। ये 4 वर्ण और 4 आश्रम जो है ये मैंने बनाए हैं। और इसलिए पूरे ब्रह्मांड में आप कहीं भी चले जाएं, पूरे ब्रह्मांड पे, हर ग्रह पे, हर लोक में और पृथ्वी, सभी जगह, सभी देशों में आपको वर्णाश्रम मिल जाएगा। ये अलग बात है कि कलयुग में अभी वो विकृत रूप में और वास्तविक रूप में नहीं मिलता, लेकिन फिर भी सभी जगह आपको विद्यार्थी, गृहस्थ, रिटायर्ड लोग, ये सब जगह मिल जाएंगे, क्योंकि ये भगवान की कृति है, ये किसी मनुष्य की कृति नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि ये सारी चीजें ब्रह्मा जी ने इसका सृजन किया, और उनसे ये सारे धर्म के आयाम भी प्रकट हो रहे हैं। तो आज का सत्र यहीं विराम देंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे आगे आने वाले सत्रों में। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।